Yeah, this example that we are discussing is based on combination of capacitors. तो हम लोग का लास्ट टॉपिक था. Combination of capacitors. इसमें question number is 2.25. What is the question? देखो question में आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, combination दिया हुआ है, in which the first capacitance C1 is of 100 picofarad. ठीक है. इसके बाद इसके साथ एक और कैपेसिटर लगा हुआ है. This capacitor C2 is of 200 picofarad. With that, we have another capacitor C3, which is also at 200 farad. और उसके बाद, when you connect these 2 points, these two are together connected to a source of 300 volt potential difference, right? Yes, and last capacitor is C4, also of 100 picofarad. तो ये वाला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है हम लोगों को, एंड हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट, determine the charge and voltage across each capacitor. Determine the charge and voltage across each capacitor. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका होगा जो कॉम्बिनेशन का क्या मान देखते हो. नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन, जो मैंने लास्ट में बताया था, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल्स. टर्मिनल मतलब द एंड्स विच आर कनेक्टेड टू द सोर्स. बैटरी के साथ जो सर्किट होता है वहां से स्टार्ट करना. ठीक है. So if I start from the positive of the battery, let's draw it once again, right, in a simple manner. If I start with the positive end of the battery, see, positive of the battery के साथ हमारे पास एक C1 लगा हुआ है, दिख रहा है? Yes or no? देखो, एक दो कनेक्शन निकला है. One connection is directly going to one plate of C3, right, which is connected to C. यहाँ पे आ गया, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दिया B. So this is the branch AB that I am drawing. So now here both the capacitors are of 200 picofarad. हो गया. उसके बाद देखो A के साथ B का एक और कनेक्शन है, which is through C1. दिख रहा है? A से B का डायरेक्ट कनेक्शन भी है, which is through C1. Right? And then B के साथ we have connected one C4. B के साथ we have connected C4, which is going to negative of the battery. So now, actually, though the design of the circuit is given in a different manner, actually क्या होगा? C2, C3 in series, okay? With that C1 is in parallel, and with the resultant C4 is also in series. यहाँ तक clear हुआ बात? Yes or no? And what is the total applied voltage? The total applied voltage is of 100 volt. Let's call it, sorry, 300 volt. Let's call it V. Okay. So let's start simplifying one by one. तो सबसे पहले क्या होता है? We can see that in this case our C2 and C3 are in series. So what will be the equivalent of C2 and C3? Equivalent of C2 and C3 कितना होगा? बोलो. बहुत सिंपल है. लास्ट में बताया था, अगर हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स in series है तो टोटल कितना होता है? वैल्यू ऑफ ईच बाय द नंबर n. So here we have value of each as 200 by how many such are there? 2. So 200 by 2, that means equal to 100 picofarad. Right? अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग C2 C3 को एक सिंगल, मान लो इसका नाम दे दिया हमने C डैश, इससे रिप्लेस कर देंगे. समझ में आ रहा है? Now with C dash C1 is in parallel. Okay? Now we can say that C dash and C1 are in parallel. Here equivalent capacitance is
their equivalent capacitance is कितना? पैरेलल में क्या होता है? एडिशन होता है, तो 100 प्लस C1 कितना होगा? 100. 100 plus 100 will be 200. Done. Finally, we will draw this as what? Only this 200 picofarad, which is combined with C4. Right? तो क्या बोलेंगे? Equivalent capacitance of the combination. Equivalent capacitance of the combination. ठीक है, let's call it C. कितना आ जाएगा? C इक्वल टू सीरीज में क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 1/C1 प्लस 1/C2 तो होता है, ये सुनो. तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/200 प्लस 1/100, दिस मच इक्वल. तो एलसीएम ऑफ 200 100 कितना होता है? 200 होता है, राइट? दिस एलसीएम विल बी 200, दिस विल बी 1 प्लस 2 and reciprocal of that. So this will be equal to 200 by 2. So total capacitance of the combination में निकाल लिया. How much is it coming? 200 by 3 picofarad. So we can say total charge stored in the combination. Total charge stored in the combination, right? Q, capital Q कितना हो जाएगा? C into V. So C is 200 by 3. P को मतलब क्या होता है? 10 to the power minus 12. V is 300. This much coulomb. So what is the answer? Solve कर लो. ये 100 हो गया. तो 2 into 10 to the power, इधर 1 2 3 4 है और minus 12 तो कितना हो जाएगा? minus 8 coulomb. ठीक है. First part is done. यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद चीजें पूछा भाई. Everything done? Yes or no? Finished? Yeah, तो clear है. Now what to do? Now we have to find out charge across each capacitor and voltage across each capacitor. अब ध्यान से देखो, C2 and C3 सीरीज में है, उसके साथ C1 पैरेलल में है, यानी जो C2 C3 C1 का कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना होगा? C2 C3 टुगेदर पे भी वोल्टेज कितना होगा? बिकॉज दे आर इन सीरीज एंड विद दैट C1 इज इन पैरेलल. C4 जो है वो बैटरी के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो वी कैन से टोटल चार्ज कितना होगा? C4 में भी चार्ज कितना होगा? सेम होगा. तो वी कैन से दैट चार्ज स्टोर्ड इन C4, charge stored in C4 will be same as Q, which is 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. Therefore, potential difference across C4 कितना हो जाएगा? It will be, we know, V equals to Q by C. It will be Q by the value of C4. Q कितना है? 2 into 10 to the power minus 8 coulomb divided by C4 का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? देखो, C4 का वैल्यू was 100 picofarad. तो 100 into 10 to the power minus 12 farad. तो आंसर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 200 वोल्ट. आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 एंड चार्ज अक्रॉस C4 खत्म. अब एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज 200 वोल्ट. अब देखो, यहाँ पे अगर 200 वोल्ट होगा, टोटल कितना है? 300 वोल्ट. इन सीरीज वी नो V इक्वल टू V1 प्लस V2. तो अगर C4 के अक्रॉस 200 है, बाकी के अक्रॉस कितना है? 100 वोल्ट. So now this implies that potential difference across the combination of C2, C3 and C1
potential difference will be 300 minus 200 100. ठीक है, यहाँ पे क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस कॉम्बिनेशन को अगर देखो तो C1 अकेला है। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है ना एंड पॉइंट्स पे। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा C2 C3 का मिला के उतना होगा। इस बार सुशी बोल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन माने अगर पॉइंट ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वो C2 C3 के लिए भी V है और C1 के लिए अकेला भी कितना है, V ही है। Yes or no? So simple we can say therefore potential difference across C1 will be equal to 100 volt। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 100 वोल्ट हो गया therefore चार्ज स्टोर्ड इन C1 कितना होगा, कितना हो जाएगा बोलो? चार्ज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। चार्ज विल बी C इंटू वी। तो C कितना निकला, कैपेसिटेंस ऑफ वन कितना है बोलो, कैपेसिटेंस ऑफ वन इज 100 किलो फैराड। तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू वी कितना है 100 वोल्ट कूलम। व्हाट इज द आंसर, 10 की पावर माइनस। এখন টোটাল চার্জ কত ছিল, টোটাল চার্জ ওয়াজ 2 into 10 to the power minus 8 और C1 के पास कितना आ गया, ओनली 10 to the power minus 8। तो बाकी कहां जाएगा, C2 और C3 के पास। therefore we can say that charge stored in C2 which is equal to charge stored in C1 which is equal to charge stored in their series combination it will be equal to 2 into 10 to the power minus 8 coulomb minus 10 to the power minus 8 coulomb. So that will give us 10 to the power minus। Okay, clear? चलो, yes or no? अगर देखो तो C2 और C3 का कैपेसिटेंस सेम है। मैंने क्या बताया था लास्ट से, याद करो, अगर कैपेसिटेंस सेम होगा तो कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज होगा इट विल डिवाइड इक्वली। अब C2 C3 का कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कितना है टोटल, what is the potential difference across combination of C2 C3, 100 volt। therefore we can say that potential difference across C2 which is same as potential difference across C1 कितना हो जाएगा, each one में चार्ज कितना है 10 to the power minus 8 और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस कितना था 200 पिको फैराड। तो आंसर क्या बनेगा 10 to the power minus 8 by 200 into 10 to the power minus 12 दिस मच वोल्ट। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो 10,000 by 100, 10,000 by 200 बनाना पता है, 10,000 by 200 माने 50 वोल्ट, टोटल का हाफ हो जाएगा। समझ आ रहा है, वी हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। चार्ज स्टोर्ड इन C2 और C3 सेम होगा क्योंकि जो सीरीज में क्या बताया था लास्ट में कि अगर मुझे एक सीरीज ब्रांच मिला तो चार्ज स्टोर्ड इन वन विल नॉट डिपेंड अपॉन इटसेल्फ, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ देम व्हिच आर इन सीरीज बिकॉज़ चार्ज स्टोर्ड इज सेम इन सीरीज। ठीक है, चलो चलिए उसको ले कमिटा उसको ले कुंजाड़ उसको शुरू देखने प्रियांश देखने कुंजा का परिवार स्टोरी लिखी है। आंसर ठीक है सर, तो 2.25 देखने एक बार देखने ভালো করে, ঠিক আছে সলিউশনটা देख लो ध्यान से क्या बोल रहा था। दिस इज द सर्किट गिवन टू अस। এই সার্কিটে কয়টা ক্যাপাসিটর আছে দেখ, we have four capacitors, they are connected to a 300 volt source, can you see that 300 volt source यहाँ पे, ठीक है।
हमें निकालना है व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। এবার চার্জ স্টোর বের করতে গেলে इफ यू वांट टू फाइंड चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस ईच कैपेसिटर तो हमें ये पता होना पड़ेगा कि टोटल कॉम्बिनेशन में चार्ज कितना है या इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस पता होना पड़ेगा, तभी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड ये दोनों चीज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। टू डू दैट वी आर सिंप्लिफाइंग द सर्किट। এটা সার্কিটটা দেখতে অনেক ঝামেলা মনে হচ্ছে, কিন্তু ইফ ইউ সিম্পলিফাই দিস ইউ উইল বিকাম আ वेरी सिंपल सर्किट। कैसे देखो, स्टार्ट करना कहां से, बैटरी से। तो बैटरी पॉजिटिव से क्या कनेक्टेड আছে ए, बैटरी पॉजिटिव के साथ वी आर कनेक्टेड ए। अच्छा, ए के साथ C3 का एक प्लेट लगा हुआ है, ये C3 होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला ए के साथ C3 का एक प्लेट लगा हुआ है, राइट, डन। अच्छा, C3 का सेकंड प्लेट कहां पे लगा हुआ है, C3 का सेकंड प्लेट कहां पे लगा हुआ है विद C2 का फर्स्ट प्लेट। C2 का सेकंड प्लेट कहां पे लगा हुआ है, B के साथ, हो गया। अब देखो A और B के साथ डायरेक्टली C1 भी अटैच्ड है। अच्छा, जहां पे B खत्म हुआ वहां से C4 का फर्स्ट प्लेट शुरू हुआ एंड C4 का सेकंड प्लेट कहां खत्म हुआ, नेगेटिव पे, हो गया, बात खत्म, ठीक है। माय सर्किट इज सिंप्लीफाइड। तो व्हाट आई कैन से, C2 C3 आर इन सीरीज, सीरीज है ना, C2 C3 एंड टू एंड, with that C1 is in parallel, with that C4 is again in, চলো এভরিথিং স্টোরি ফিনিশ। এবার সলভ করি। তাহলে যদি C2 আর C3 সিরিজে হয় তাহলে ওদের ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে, 1/C = 1/C1 + 1/C2 করে আসবে। ক্যাপাসিটরের সিরিজটা রেজিস্ট্যান্সের প্যারালাল মতন হয় না, 1/R = 1/R, ঠিক আছে। In capacitors in series, the formula for equivalent capacitance is similar to equivalent resistance in parallel। চলো এবার যদি ধর আমি যদি এখানে লিখি 1/C = 1/C1 + 1/C, যদি C1 C2 ইকুয়াল হয়ে যায়, if C1 = C2 = X, তাহলে কি লিখবি, 1/C = 1/X + 1/X, that will give us 2/X, this is 2/X। So when identical capacitors are in series, total कितना होगा, वैल्यू ऑफ ईच बाय द नंबर। तो वैल्यू ऑफ ईच বলতে হবে আছে 200 পিকোফ্যারাড বাই কয়টা আছে, দুটো, ডিভাইড করতে তাহলে কত পাবি। with this 100 C1 is in parallel, C1 कितने का है, वो भी 100 का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 + 100 200। बोलो, with that C4 is in series, তাহলে কত হয়ে যাবে, reciprocal of 1/200 + 1/C4 হচ্ছে 100, তাহলে কত হবে, 200/2। यानी the whole thing can be replaced by a single capacitance of 200/2। so how much charge will it store, C into V, right? तो ताले charge stored will be C 200/3 picofarad multiplied by V कितना है 300 volt। ताले आंसर कत আসবে 2 × 10⁻⁸। तो এবার ये जो हम लोगों का टोटल चार्ज Q है वो डिवाइड करेगा ना, the total charge Q will get divided, some part will go to C3 and C2, the remaining part will go to C1 and the total charge will appear across C4 also, because C4 series है तो ওটাই বের করলাম আমরা इंडिविजुअल। नाउ अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस के अगेंस्ट चार्ज पता है, कैपेसिटेंस गिवन है, तो वोल्टेज निकल जाएगा, हाउ V = Q/C। এটাই করি, चलो दिस वी हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप, क्लियर, क्लियर दिस वाली गुड, कोई कंफ्यूजन है बोलो, and then switch next। अच्छा, एक क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2.20 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.20। 2.20 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। 2.20 look at it, কি বলছে, two charge conducting spheres of radii A and B
there are two charge conducting spheres. मतलब, suppose this is one conducting sphere, okay, and this is another conducting sphere. First one has radius RA, second one has radius RB. Okay, both of them are connected to each other by a wire. Okay, what is the ratio of electric fields at the surface of the two spheres? Use the result obtained to explain why charge density on sharp and pointed ends of a conductor is high than on flatter portion. ठीक है सर, এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, এটা মনে রাখতে হবে। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि whenever two conductors are joined, ठीक है, let's assume that let at equilibrium charge on first sphere be 1 and charge on second sphere be 2. ना हमें पता है कि जब चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, sharing by charges takes place, still the potential becomes equal. So we can say that V1 should be equal to V1 कत है Q1 by 4 pi epsilon naught R1. V2 कत है Q2 by 4 pi epsilon naught R2. ठीक है सर, this means Q1 by Q2 will be equal to R1 by R2. Therefore, we can say ratio of charge densities, ratio of surface charge densities, sigma 1 by sigma 2. Sigma 1 मानेगी Q1 by 4 pi R1 square. तो क्वेश्चन आगे पढ़ेছিলাম। sigma 2 मतलब Q2 by 4 pi R2 का स्क्वायर होगा। And say sigma 1 by sigma 2 will be 4 pi cancel Q1 by Q2 into R2 by R1 whole square. Q1 by Q2 कितना आएगा? R1 by R2 आएगा into R2 square by R1 square होगा. It will get cancelled out. तो वैल्यू क्या बचेगा? R2 by R1. तो see, sigma 1 by sigma 2 is equal to R2 by R1, right? Sigma 1 by sigma 2 है R2 by R1. What does it imply? It implies that sigma is inversely proportional to, माने कि charge density on a conductor at any point is inversely proportional to radius of curvature of the surface at that point. चलो कि बोललाम पॉइंट लिखे में, therefore charge density on the surface of a conductor at any point is inversely proportional to the radius of curvature of the surface at that. Right. Therefore, at sharp pointed ends where radius of curvature is less, charge density will be high. And at flatter portions where radius of curvature is more, remember, जितना flat होगा, जितना curvature कम होगा, radius of curvature उतना ज्यादा होगा. जितना curvature ज्यादा होगा, radius of curvature कम होगा. उल्टा. समझ आ रहा है? So what we can say? Therefore, we can say at sharp ends where R is small, sigma will be high, and at flatter portion where R is
large, sigma will be small. ঠিক আছে, এর দিয়ে ক্লিয়ার হলো কথাটা কি বললাম? yes or no? তাহলে মনে রাখবি, রিমেম্বার, whenever you charge any conductor under electrostatic condition, we know charges are on the surface. Under mutual repulsion, the charges will distribute all over the surface, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है. अगर स्पेयर है तो स्पेयर का हर एक पार्ट उसी स्पेयर को बिलोंग करता है. ऑल ऑफ देम हैव द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सिग्मा विल बी यूनिफॉर्म. किंतु सपोज अगर मैंने एक ऐसा शेप बनाया, तो ये जो पोर्शन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बहुत स्मॉल है. रेडियस कम है ना इसका, इट इज हाईली कर्व, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? बहुत हाई होगा. ये वाला पोर्शन फ्लैट है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत लो होगा, चार्जेस दूर दूर रहेंगे. फिर से ये वाला पार्ट शार्प है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा. तो वेदर द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉट, इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द. আর একটা পার্ট কি ছিল কোশ্চেনের? হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড এট দ্য সারফেস? তো নাও উই নো কি রেশিও অফ electric field just outside the conductor. ও হয়, আমরা জানি কি জাস্ট আউটসাইড দ্য সারফেস ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা কি ছিল ফর আ চার্জ স্ফিয়ার? ইট ওয়াজ q বাই 4 পাই এপসিলন নট r স্কয়ার, বা সিম্পল সিগমা বাই এপসিলন নট আমরা বলতে পারি. So no, we can also call it sigma by epsilon naught for a conductor. So this will be equal to sigma 1 by sigma 2. That will be equal to what? R2 divided by R. Yes, sir. यहाँ तक clear? Any confusion? Everything clear, sir? Right. Clear है अभी? Yes or no? अब देखो next question एक देख लो. अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10. पेज नंबर इज 2.85. ऐसे लग रहा. ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स है. एक बड़ा स्फीयर है, राइट, कंडक्टिंग स्फीयर्स और शेल्स. इनसाइड दैट वी हैव अ स्मॉलर वन.
एंड इसके अंदर वी हैव अनदर स्मॉलर वन. ठीक है. देयर आर थ्री कंसेंट्रिक स्फीयर्स. So the innermost one has radius a. After that, the next one has radius b, and the third one has radius c. ठीक है. फर्स्ट वाला स्फीयर को we have given a charge density plus sigma. The second one has charge density minus sigma. The third one has charge density plus sigma. तो निकालना क्या है? निकालना है कि find the potential of the three shells A, B, and C. This is A, this is B, and this is capital C. Small c is the radius. Right? Remember here. Remember कि जो मैंने बताया था प्रॉपर्टी कि जब हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल होगा या कंडक्टिंग स्फीयर होगा, at all points inside is potential same as that on the surface, and outside में potential कैसा होगा? Just like the whole charge is concentrated at the center. So যদি আমি বলি যে potential of A কত হবে, so it will be potential of A due to its own charge plus potential at A due to the charge on B plus potential at A due to the charge on C. তাহলে কি লিখবো? Due to its own charge, potential will be 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by charge of A divided by its own radius. ঠিক আছে. তারপরেরটা কি হবে? তারপরেরটা হয়ে যাবে হচ্ছে চার্জ অফ বি. এবার চার্জ অন এ কত হবে বল? ডেনসিটি অফ চার্জ ইজ সিগমা. তাহলে চার্জ কত হয়? সিগমা ইনটু 4 pi a স্কয়ার, তাই তো? চার্জ ইজ চার্জ ডেনসিটি ইনটু এরিয়া. সো দিস উইল বিকাম pi a স্কয়ার সিগমা. তারপরে সেকেন্ডটার জন্য কি হবে? সেকেন্ডটা ইট লাইজ ইনসাইড এন্ড উই নো ইনসাইড পোটেনশিয়াল ইজ সেম এভরিওয়্যার. তাহলে কি হয়ে যাবে? মাইনাস 4 pi b স্কয়ার সিগমা বাই যাচ্ছে কি বললাম. তারপরেরটা কি হবে? For C also, it lies inside. The potential will be same as that on the surface. So plus 4 pi C square C sigma by C. समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Potential inside is same as that potential on the surface. इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया. तो कितना आ गया? Potential of A becomes, अगर मैं 4 pi cancel out कर दूं तो it becomes A minus B plus C multiplied by sigma by. ठीक है. This is the first part. ঠিক আছে. তারপরে কি বের করতে লাগবে? পোটেনশিয়াল অফ শেল বি. তো সেম ওয়ে বলো, পোটেনশিয়াল অফ শেল বি कितना होगा? 1 by 4 pi epsilon naught due to charge on A. पोटेंशियल क्या होगा? QA, that is 4 pi A square sigma by distance of shell B from center. कितना है वो? B है. Due to its own charge कितना होगा? Charge on B, that is minus 4 pi B square sigma by its own radius, that is B, plus due to charge on C कितना होगा? Charge on C by radius of C because it lies inside. So 4 pi C square sigma by C. ठीक है. चले, what do we get? We get potential at B equals to 4 pi cancel out कर दो तो बचेगा क्या? You will get A square by B minus B plus C multiplied by sigma by 7. ठीक है. क्लियर हुआ बात? बोलो, समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एट सी. पोटेंशियल एट सी अपने चार्ज के लिए कितना होगा? अच्छा, चार्ज ऑफ ए के लिए कितना होगा? तो चार्ज ऑन के ए 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाई ए के सेंटर या बी का सेंटर सी का सेंटर सब तो सेम ही है. वहां से सी का डिस्टेंस कितना है? सेकंड वाले का लिए कितना होगा? 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा बाई सी. बी नहीं होगा क्योंकि सेंटर का डिस्टेंस कितना है? सी ही है. एंड लास्ट वाला अपने वाले के लिए कितना होगा? 4 पाई स्क्वायर 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाई सी. क्लियर?
So that will give us what? BC equals to, again, if I take common, then A square by C minus B square by C plus C multiplied by sigma by 7. हो गया? So this will be the relation between potential at A, B and C. Now it is given, if the shells A and C are at the same potential, obtain the relation between the radii. So now second part of the question में क्या बोल रहा है? कि V at A is equal to V at B is equal to V at C. इक्वेट कर दो. तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे? A और B को इक्वेट करने से क्या लिख सकते हैं? A minus B plus C equals to A square by B minus B. लिख सकते हैं from first two. ठीक है सर? So if that happens, what will happen? B and B will get cancelled out. Okay? Done. Or if you want, you can equate the first and the third also. जो मर्जी कर सकते हैं. पहले किया है, solve करने पर किया है, solve. A square by B minus B plus C and A minus B plus C. If I equate it, what do you write? What do I get? Acha, potential at A and C is equal, not B and C. Question is potential at A and C is equal. So equate A and C. A and C कितना था? A square by C minus B square C. ठीक है? तो ये प्लस C वाला पार्ट में कैंसिल आउट. तो क्या बचेगा? A minus B equal to A square minus B square by C. But we know A square minus B square means A plus B into A minus B. So A minus B will get cancelled out. So simply we will get C equals to A plus. ठीक है सर? करना रहा बात. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. बात मत करो, डोंट टॉक. क्वेश्चन इज, सपोज आई हैव अ स्फीयर लाइक दिस. ठीक है? दिस इज अ न्यूट्रल conducting sphere, right? Suppose O is the center, and from the center O, at distance small r, we have a charge plus Q. Okay? And we have a point A inside the sphere, which is at distance x from the charge. ठीक है? So now you know कि जैसे ही मैं प्लस Q को रखूंगा क्या होगा? What will happen to the conducting sphere? Will it remain neutral as it is? कुछ चेंज होगा? क्या होगा? इंडक्शन होगा. Charges will be induced. तो क्या होगा? On the nearer face, we will get negative charges. Yes or no? On the farther face, we will get positive charges. Right? So question क्या है? Question is that find the potential at A due to the induced charge. Find the potential at A due to the induced charges.
कैसे निकालेंगे बोलो, व्हाट विल बी द आइडिया टू फाइंड इट आउट? क्या होगा, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? तो यार हमने कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, हाँ बोलो। Find will the charge of A. A does not have any charge. A is inside the sphere, right? We have to find out what is the potential at A due to the induced charges, not due to plus Q charge. So we discussed one property. याद करो क्या property था? Very important property of conductors is what? In electrostatic condition, in electrostatic condition, we know electric potential, electric potential is same at every point. याद है? Is same at every point inside the conductor. याद है कि नहीं? Under electrostatic condition, electric potential is same at every point inside the conductor. पढ़ा था? As well as on the surface. Right? No. Can you see? So अगर electric potential same at the each and every point है, so I can say potential at A will be equal to potential at C. होगा? क्योंकि A भी inside है और not C, sorry. What is it? O. Center जो है. Clear? अब पोटेंशियल एट ए किसकी वजह से आएगा? इट विल बी ड्यू टू द चार्ज क्यू एज वेल एज इंड्यूस्ड चार्जेस. वी कैन से इट विल बी पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस. एंड पोटेंशियल एट ओ भी क्या होगा? पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस. दैट मीन्स पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू plus potential at O due to induced charges minus potential at A due to Q. ठीक है? अब Q पॉइंट से पॉइंट O का डिस्टेंस कितना है? R है. पोटेंशियल कितना होगा? What was the formula for potential of a point charge? Q by 4 pi epsilon naught R. होगा? अच्छा, ये जो सारे इंड्यूस्ड चार्जेस है, all of them are at the same distance from the center. तो अगर पॉजिटिव वाला पोटेंशियल देगा k इंटू क्यू बाई आर, नेगेटिव वाला कितना देगा? k इंटू माइनस क्यू बाई आर, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो पोटेंशियल एट सेंटर बिकॉज ऑफ देयर ओन चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी कितना? 0. एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट a ड्यू टू क्यू चार्ज? तो a इज दैट डिस्टेंस x. तो फॉर्मूला क्या होगा? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x. अल्टीमेटली व्हाट विल बी द आंसर? पोटेंशियल एट a ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट common 1 by r minus of 1 by. ठीक है? क्लियर हुआ? यस और नो? चलो কি বললাম? নিজে বুঝতে পেরেছিস? অল্প কেন আছে লেখ না.
Finished? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज n spherical droplets, each of radius small r, have been charged to have a potential V volts. If all these drops, volts, if all these droplets coalesce or combine to form a single large drop, what would be the potential of this large drop? What would be the potential of each of radius r? Coalesce means to combine, merge together. To form a single large drop, what would be the potential of this large drop? Yes, sir. So how to solve that? Two things will happen here. Number one, we know that whenever the drops will combine, the total final mass or volume should be equal to total initial mass or volume. Number one. Number two, charge is also conserved. Right? So the total initial charge must be equal to total final charge. So the first point, what we will say, point number one, we will say that total initial volume, matlab 4/3 pi r cube into n, that must be equal to total final volume. So 4/3 pi capital R cube. Suppose capital R is the radius of the bigger drop. তাহলে এখান থেকে আমার ক্যাপিটাল আর কিউব কত চলে আসবে? n টাইমস অফ স্মল আর কিউব। তার মানে ক্যাপিটাল আর কত চলে আসবে? কিউব রুট অফ n মাল্টিপ্লাইড বাই r। হলো? Is that clear? Second point, total final charge, say capital Q, ঠিক আছে, will be equal to n times the charge on each sphere. হবে? Yes or no? Clear by other? Therefore, we can say potential of the bigger drop or the large, আমরা জানি যে টোটাল ইনিশিয়াল মাস मतलब वॉल्यूम into डेंसिटी तो सेम ही रहा ना, सेम लिक्विड, तो वी कैन से टोटल इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। ईच ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कितने ड्रॉप्स थे? n नंबर, तो टोटल कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब n इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम কি হবে? 4/3 পাই ক্যাপিটাল আর কিউব, ইকুয়েট করে দিলাম। So we got the relation between capital R and small r. First part done. Second part, total initial charge. Suppose if each small drop having radius small r was having a charge q, ঠিক আছে, এরকম কয়টা ড্রপ ছিল? n টা, তাহলে টোটাল চার্জ কত হলো? n into small q, that should be equal to capital Q. So potential of the large drop कितना हो जाएगा? It will be capital Q by 4 pi epsilon naught into capital R. We are considering the drop is a spherical conductor kind of. ঠিক আছে? If that happens, capital Q is what? N into small q by 4 pi epsilon naught. Capital R is what? Cube root of n into small r. তাহলে কি থাকলো? n to the power 2/3 into q by 4 pi epsilon naught r.
Now, if the charge on the small drop and its radius was r, what was v? Its potential v was how much? Potential v was q by 4 pi epsilon naught small r. This was potential of each drop. তাহলে এখানে potential কি হয়ে যাবে? n to the power 2 by 3 multiplied by, yeah, यहाँ तक क्लियर हुआ बात? क्वेश्चन लिखो. প্রিয়া বুঝতে পারছিস? So our next question is, okay, लिख लो क्वेश्चन को, लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो, a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor has a thin aluminum foil placed in between the plates as shown. Yeah. Okay, has a thin aluminum sheet placed in between the plates as shown. Right? Explain how will the capacitance change if the sheet number 1 remains insulated, number 2 is connected to
one of the plates use a conducting wire. ঠিক আছে, বুঝে গেল? Now, how to solve this question? This kind of question we solved yes last day also. Remember, बीच में sheet insert करने से कैसे change करेगा? So see, first of all, what we will assume? First, we'll assume that when the capacitor was alone, right? What was the capacitance of the combination? It was epsilon naught A divided by D. If A was the area of each plate and if D was the distance between the two plates. Now, in case number 1, what will happen? The plates will remain as it is and the foil is just at the center. If the upper plate has positive charge, देखो ध्यान से, अगर upper plate पे मैंने positive charge दिया, तो इस sheet का nearer face will become negative and the next face will become positive and the second plate is also negative. Okay, so this will look like two capacitors, one after another. Okay, let's call them C1 and C2. How much is C1? Epsilon naught A divided by D by 2. Distance half हो गया. Distance has been half. How much is C2? Same, epsilon naught A divided by D by 2. Okay, or we can say this will be 2 epsilon naught A by D. Will also be 2 epsilon naught A by D. And they are in what? Series. So, series combination of capacitance की हो जाए? कितना हो जाएगा? 1 by reciprocal of 1 by C1 plus 1 by C2. But here both of them are identical. Value of each by the number. So value of each is 2 epsilon naught A by D divided by 2. 2 will cancel out. We will get epsilon. Is same as the original one, right? So what we can say? The capacitance remains unchanged. Capacitance remains. क्लियर हुआ? तो अगर वो एल्युमिनियम फॉइल इंसुलेटेड रहा, अगर उसने किसी प्लेट को टच नहीं किया, तो कैपेसिटेंस अनचेंज रहेगा, राइट? नाउ बाय चांस सपोज इट टचेस द अपर प्लेट, व्हाट विल हैपन? इफ द एल्युमिनियम फॉइल will touch the upper plate, if it is joined to the upper plate by a wire, what will happen? Both the things will come together. कंडक्टर को जब ज्वाइन करते तो क्या होता है? दे कम एट सेम पोटेंशियल. तो अल्टीमेटली देखने में क्या हो जाएगा? एज इफ द कैपेसिटर हैज बिकम दिस नाउ. दैट मींस एरिया ऑफ ईच प्लेट रिमेन्स A, बट द डिस्टेंस बिकम्स कितना? D by 2. तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D by 2. दैट मींस 2 एप्सिलॉन नॉट A by D. दैट मींस ट्वाइस ऑफ C. So we can say the capacitance B double. Yeah. So if the foil remains insulated, capacitance will remain same. If it is touched to one of the plates, capacitance will be double. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस और नो? বুঝা যাচ্ছে? দুটো মানে ফয়েলটার সাথে আপার প্লেটে কানেক্ট করে দিলাম, তাহলে দুজনের পোটেনশিয়াল সেম হয়ে গেল। তাহলে আপার প্লেটটা থাকার মানে যা আর ওটা নিচে চলে আসার মানে একই, বিকজ ইট ইজ কানেক্টেড। এখানে যা পোটেনশিয়াল কোনো তাই পোটেনশিয়াল। তাহলে আলটিমেটলি কি হয়ে গেল? পজিটিভ প্লেট আর নেগেটিভ প্লেটের মাঝখানে ডিসটেন্স কত হয়ে গেল? D by 2 হয়ে গেল।
फिनिश्ड, डन टिल दिस फार। अच्छा, लास्ट डे मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, उसको भी देख लो। लास्ट डे क्वेश्चन है, टेस्ट वाला क्वेश्चन। কতজন বুঝতে পারছিস না গল্প করে যাচ্ছি? এটা না। আচ্ছা, let me see if it is here. Oh, got it. चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अ टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू is moved without acceleration from A to C along the path from A to B and then from B to C as shown. The diagram is given. What is the diagram? We have a uniform electric field represented by parallel and equidistant field lines. ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, just below that we have another point C, and we have a point A. So the charge is taken from A to B, then from B to C. Okay, coordinate of A is 6, 0. Coordinate of C is 2, 0, and coordinate of B is 2, 3. What is the question? Electric field is E, right? What is the question? Calculate the potential difference between A and C. Calculate the potential difference between A and C. Right? Second part, at which point is the electric potential more and why? Is the delta R by delta is hyper. अब देखो, first point we know, we have to find potential difference between A and C. How to do it? Already I told you, definition of potential difference is what? VA minus VC will be equal to integration minus E dot DL from C to A. right? From C to A, smaller to larger हम लोग हमेशा मेजर करते हैं। अब देखो, अगर तुम C to A आओगे, if you want to come C to A,
right? Or you want to come from A to C. Along which path are you moving? Is it important? No, क्योंकि हमें पता है electrostatic force is conservative force. Path is not important. You have to see the work done based on the initial and final point only. अब सोचो, अगर मैं C से A को, if I take a charge from C to A, C से मैंने एक पॉजिटिव Q को लिया और मैं A पे लेके गया. The charge is moving along the field. Work done by field क्या होगा? Positive or negative? Work done by field will be positive or negative? Positive. Work done by field will be positive ना? समझ में आ रहा है? तो E is uniform. What is the distance between A and C? 6 minus 2, 4. Will it be positive or negative? Negative, because means negative sign is there. The answer क्या होगा लो? -4. The potential difference between A and C is -4. That means we can say that potential at C minus A will be positive. So the second part follows from this, that C is at higher potential than A. Yes or no? Clear? Point is clear. The potential at C is more than A. क्यों? क्योंकि जब हम C से A पे जाएंगे तो work done will be by the field, potential will decrease. But if I come from A to C, work done will be done against the field, potential will increase. That's it. It's a board question. Important question. क्या था? नेक्स्ट देख लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. Finished? The next question is, the graph shows the variation of voltage V across the plates of two capacitors A and B versus charge capital Q stored on them. ठीक है? Question is, which of the capacitors has larger plate separation if each has the same area of the plates? Explain. And the graph is shown in this manner. Here we are plotting Q. Since we are plotting V. Okay, there are two lines. One line for A. क्वेश्चन ये नहीं है कि कैपेसिटेंस ज्यादा है कि कम है, हमें ये बताना है कि which one has larger plate separation. ठीक है? हाउ टू डू इट? वेरी सिंपल. लास्ट में मैंने बताया था, याद करो.
If you plot a graph between Q and V, Q on y-axis, V on x-axis, slope of the graph will be equal to C. किंतु এখানে কি প্লট করেছি V by Q, तो यहाँ पे slope of the graph क्या मिलेगा 1 by C. Yes or no? So we can see that slope of, in the solution, first step we'll write that slope of V versus Q graph equal to 1 by C, right? This implies 1 by CB is more than 1 by CA. Okay? Or we can say capacitance of A is more than capacitance of B. Right? Yani we can say the epsilon naught multiplied by area of A by distance between plates of A will be more than epsilon naught into area of B by distance between plates of B. But area of plate A and area of plates of B are same. This means what? 1 by dA is more than 1 by dB, or I can say dB will be more than dA, right? Thus, the plate separation is greater for clear है? सिंपल कंसेप्ट है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो अगर ए सेम है तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका कैपेसिटेंस कम है, जिसका ये सुन लो समझ में आया? तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो चैप्टर को एंड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस वेरी माइन्यूट. तो फ्राइडे को वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज करंट इवेंट्स. नेक्स्ट यूनिट फ्राइडे को स्टार्ट करूंगा. ठीक है सर? जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड डेरिवेशन, एग्जांपल इस चैप्टर का हर एक एग्जांपल प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन और डेरिवेशंस भी प्रैक्टिस करना है अच्छे से. ठीक है? नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट होगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे चैप्टर 2 का टेस्ट होगा. Any other? Are you getting? Sure. देख के नहीं लगेगा. Little bit understanding. To tell what is the confusion. Capacitor.